From Prashant Kishore's ultimatum to Bihar police to Punjab Bandh and Kejriwal's schemes for priests and granthis, here are the major stories of the day in this news wrap, and you are watching the Indian Express. Let's get started. A day after police used lathi charge against students demanding a re-examination of the Bihar Public Service Commission prelims, protesters met with State Chief Secretary Amritlal Meena on Monday. However, the meeting yielded no concrete assurances or timeline to address their key demands, including the withdrawal of FIRs filed against over a dozen students. Jan Suraj Party founder Prashant Kishore, a vocal supporter of the students' cause, faced sharp criticism for his actions during the protest. RJD leader Tejasvi Yadav accused Kishore of running away from the protest site when the police intervened. In a strong response, Kishore issued a 48-hour ultimatum to Chief Minister Nitish Kumar's government, warning of intensified protests if the issue remains unresolved. The future of our young students should be the top priority. करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग कि जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर मैं इनडिफिनिट यहाँ पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। Farmers across Punjab staged road blockades on Monday, disrupting traffic in several regions. The statewide bandh called by Samyukt Kisan Morcha and Kisan Mazdoor Morcha was a protest against the centre's failure to address the demands of agitated farmers. The day-long protest saw a significant impact on commuter movement, highlighting the farmers' growing frustration. A statewide bandh, that's a shutdown called by the Kisan Mazdoor Morcha, that is the KMM, and Samyukta Kisan Morcha non-political, that is the SKM, is currently underway in Punjab, marking a significant day of protests from 7 a.m. to 4 p.m. on Monday today. The bandh has been organized to show solidarity with former leader Jagjit Singh Dalewal, who has been on a hunger strike for over a month to demand the implementation of 13 key agricultural reforms. Security across the state has been ramped up in response to the bandh, with several farmer groups gathering at strategic locations including highways and railway stations from 6:30 a.m. in the morning onwards.
Protesters are blocking major routes, creating traffic chaos, and halting train services at multiple points. Over 150 trains, including premium services like the Shatabdi and Vande Bharat, have been cancelled, affecting both local and long distance travel. In addition, all schools, colleges, and government offices have also been shut for the day, contributing to widespread disruptions. The Bandh, which began at 7 am, is expected to last till 4 pm, during which time farmer unions will stage chakka jams, that is, road blockades, at more than 200 locations, including highways and rural roads. The protest has been supported by truckers, further impacting the delivery of fruits and vegetables in the region's mandis, that is, markets. However, emergency services remain operational, with authorities ensuring that critical medical and law enforcement functions continue without disruptions. The Bandh has caused major disruptions in transportation, particularly affecting rail and road traffic. As of Monday morning, a total of 221 trains were impacted, including 163 cancellations, which involve critical services such as the Shatabdi and Vande Bharat. Commuters from across Punjab have faced significant delays, with many travelers forced to find alternative means to reach their destinations. In several areas of the state, roads have been blocked by farmers staging sit-ins. Notably, the Patiala-Chandigarh National Highway was obstructed near the Dhareri Jatan Toll Plaza, creating traffic snarls. In Amritsar, farmers gathered at the Golden Gate, which is a key entry point to the city, while in Bhatinda, protesters blocked roads at Rampura Full. Although the Bandh is meant to be comprehensive, farmer leaders have stated that emergency services, including ambulance and hospital transport, will be allowed. The controversy surrounding the funeral of Prime Minister Dr. Manmohan Singh deepened as Congress defended its decision not to send senior leaders to accompany his family for the immersion of his ashes. Congress claimed it was out of respect for the family's privacy. However, BJP leader Hardeep Singh Puri criticized the Congress for its absence, while Congress countered by accusing the BJP of politicizing the event. The controversy surrounding the funeral of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh intensified on Monday, with the Congress defending its decision not to send senior leaders to accompany his family during the immersion of his ashes. The Congress responded to accusations that its senior leaders did not accompany Dr. Singh's family to immerse his ashes in the Yamuna River, with the party saying it was out of deference to the privacy of the family. This came a day after BJP Petroleum Minister Hardeep Singh Puri claimed that Congress leaders had not accompanied the family during the ceremony, while BJP representatives were present. आप ये देखिए आगे उसके बाद आज उनके एशेस को इमर्स करने के ये लोग जो हल्ला मचा रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी के जिला के अधिकारी या मंडल के अधिकारी, उनमें से कोई भी नहीं था वहां पे। तो उसमें कंट्रोवर्सी जो क्रिएट कर रहे हैं उनको बोलिए जरा थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करें। मैं समझता हूं इट टोटली अननेसेसरी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था, पहले एज एन एकेडमिक, फिर एज ए सिविल सर्वेंट और उसके बाद एज ए प्रधानमंत्री। ही हैपन टू बी ए सीख, एज ए प्राउड सीख वी नॉट ओनली ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, बट द ऑनर्स दैट ही हैज बीन गिवन आर एज ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर who has served the country for 2 terms. Dr. Singh, who passed away on Thursday at the age of 92, was cremated with full state honors at Nigam Bodh Ghat in New Delhi on Saturday. Several dignitaries from India and abroad attended the ceremony. In a statement, Congress leader and Media and Publicity Department Chairman Pawan Khera clarified, and I quote, "Senior Congress leaders did not accompany the family to gather and immerse the ashes of Manmohan Singh out of our deference to the privacy of the family." End quote. He added that after the cremation, Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra had met the family at their residence to offer support. Khera explained, and I quote, "After discussing with them, it was felt that since the family did not get any privacy during the cremation and some extended family members couldn't reach the site, it would be appropriate to give them some privacy for the Phool Chunna and the immersion of the ashes, which is an emotionally painful and difficult ceremony for close family members." End quote. He further noted that during the funeral, the focus was on Prime Minister Narendra Modi. The Congress also alleged that Dr. Singh's family members were not seated in the front row during the cremation and that the Prime Minister remained seated while the tricolour
was being handed to the former PM's wife. Khera questioned why couldn't he stand up. The BJP swiftly responded, with IT department head Amit Malviya accusing Congress of politicizing Dr. Singh's death. In a post addressing Khera's allegations, Malviya said, and I quote, "It's a shame that the Congress continues to politicize former Prime Minister Dr. Manmohan Singh's death." Amid an ongoing debate over welfare schemes, Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal announced a new initiative on Monday promising a monthly honorarium of rupees 18,000 for Hindu and Sikh under the Pujari Granthi Samman Yojana. ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। That's all for today, but we leave you with the visuals of snow-covered Jammu-Srinagar National Highway.